शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार एंड गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की इस शाम मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि हमें सद्बुद्धि, सही दृष्टि और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि धन कमाना एक कला है, लेकिन धन को सही दिशा देना एक विज्ञान है। मैं जानवी तुलसियान इस शाम की होस्ट हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत एक उद्यमी के रूप में की थी, जहां मैंने विश्व के 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स खड़े किए। परंतु आज मैं एक नए क्षेत्र में कदम रखने जा रही हूँ, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट की दुनिया में। आज का ये कार्यक्रम मेरे इसी उद्देश्य की शुरुआत है, जहां मेरा उद्देश्य सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं, इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को एक नई दिशा देना है। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एक्सक्लूसिव मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज और न्यू एज इन्वेस्टमेंट आइडियाज के बारे में, फ्रॉम फिक्स्ड इनकम टू प्री IPOs, AIFs, PMSs, प्राइवेट इक्विटी, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे साउथ गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म के प्रेसिडेंट श्री निखिल मद्रासी जी को। पूरे सम्मान से उनका स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि वे हमारे समक्ष आकर कुछ शब्द करें। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का विषय अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, नेविगेटिंग मार्केट्स। हम सब जानते हैं डायनेमिक्स कितने चेंज होते रहे। कहीं युद्ध की परिस्थिति आ जाती है, हमारा पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। हम सोच रहे थे कि 1 लाख इंडेक्स कब होगा, अचानक से धड़ाम हो गया और करीबन 75,000 पे आ गया। तो ये ही डायनेमिक्स है, और यही जानने के लिए, समझने के लिए ऐसे परिवर्तन आते हैं तो किस तरह से इनमें हमें सक्सेस होना है, ये बातें लेने के लिए आज हम यहाँ चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। आज की इस शाम में हमारे पास जितने गेस्ट हैं वो सब अपने हैं, खुद के हैं। इसीलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहचान कराना मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं बनता है, लेकिन फिर भी 1940 में 16 सदस्यों के साथ शुरू हुई एक ऑर्गेनाइजेशन आज 14,000 सभ्यों के साथ आगे बढ़ रही है। 150 एसोसिएशंस एंड मोर देन 2 लाख इनडायरेक्टली मेंबर्स ट्रेड इंडस्ट्री के भरूच और उमरगाम तक के बीच में हमारे साथ कनेक्टेड है। हमारा सबसे बड़ा काम ही यही है, करीबन 300-400 प्रोग्राम एक साल में करते हैं, ताकि आपकी नॉलेज की अभिवृद्धि हो। सिर्फ अभिवृद्धि नहीं, हम कोई भी नॉलेज से पीछे न रह जाए, एक हमारी कामना होती है। एग्जीबिशन ये हमारी दूसरी पहचान है। 15 एग्जीबिशन हम खेलते खेलते कर लेते हैं। अभी ऑटो एक्सपो खत्म हुआ, 70,000 लोग आए, और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे मुझे बताने में ये बड़ी खुशी होती है कि अगले महीने हम लोग सीटेक्स यानी कि सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी का 3रा एग्जीबिशन एक साल में ला रहे हैं, और 4था और 5वां एक और एक्सपो मई महीने में। केमिकल एंड फार्मा, यहाँ के बहुत जाने माने लोग केमिकल और फार्मा के बैठे हैं, उन सभी के साथ बात हुई है, और एक वेल्थ एक्सपो भी हम लेने जा रहे हैं। मिलन भैया उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन जीटो के साथ ये हम वेल्थ एक्सपो करने जा रहे हैं। तो एग्जीबिशन हमारा बहुत बड़ा काम है। 3रा इंटरनेशनलिज्म में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कमल भाई मुझे बता के बड़ी खुशी होती है कि इस साल में 6 इंटरनेशनल डेलीगेशंस हम लेकर गए और वहां के कुछ कमा के लेके आए। और जो सबसे बड़ा MOU किया वो बोत्सवाना के साथ किया। केपी ग्रुप के फारूक भाई ने 36,000 करोड़ का MOU करके भारत की जो प्रतिभा है वो पूरे विश्व में स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। इसमें हमारा बड़ा सहयोग है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करते ही हैं, और रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी डे 1 or 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आवर साइड टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के साथ हम लोग करते हैं। तो इस गति के साथ चेंबर ने आज का कार्यक्रम जानवी जी के साथ मिलकर किया है, और जेएम फाइनेंशियल जो बहुत जाना माना नाम है पूरे देश में, उनके साथ ये कार्यक्रम किया है, ताकि हमारे ज्ञान को और अभिवृद्धि प्राप्त हो। जितने भी मेहमान उपस्थित हैं इन सभी को आप जानते हैं, जानवी जी उनका परिचय भी देंगे, लेकिन ये सब चेंबर के माननीय सदस्य गण है, इसीलिए उनका स्वागत करते हुए मुझे और बड़ी प्रसन्नता, आनंद और गर्व होता है। जानवी जी, आपको और आपके परिवार को, आपके साहस को चेंबर ऑफ कॉमर्स धन्यवाद करती है, अभिवादन करती है, और ऑल द बेस्ट भी कहती है। आप आगे बढ़िए और एक ऐसा नाम कमाए जो बहुत कम लोगों ने कमाया। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे इवेंट को और मीनिंगफुल और पावरफुल बनाने के लिए हमारे बीच ऐसे उद्यमी बिजनेस टाइकून्स हैं जो पहले किसी मंच पे एक साथ नहीं आए होंगे। इन्होंने आज पूरे सूरत के व्यापार को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया है। पूरे सम्मान और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे पहले चीफ गेस्ट श्री जैनम जी को। जैनम जी, मिलन भाई का कौन है? नो प्रॉब्लम। जैनम जी आइए। प्लीज कम। जैनम जी को फेलिसिटेट करने बुलाना चाहूंगी श्री निखिल मद्रासी और आनंद तुलसियान जी को। जोरदार तालियों से जैनम जी को स्वागत करते हैं कि वो आए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, हमें हौसला दिया। जैनम जी के जो पिता है मिलन पारेख जी, वो है चेयरमैन ऑफ जैनम ग्रुप, जिन्होंने वर्षों से सूरत के सभी इन्वेस्टर्स का मार्गदर्शन किया है। हाँ जी, ओके। रिक्वेस्ट करूंगी जैनम जी आप आए और बस 2 लाइन कहें। नहीं, बस 2 लाइन प्लीज, सबको कहना है। आइए चलिए, नो प्रॉब्लम। बुलाते हैं हमारे दूसरे चीफ गेस्ट श्री कमल तुलसियान जी को, जिन्हें यहाँ बैठे सभी उद्यमी जानते हैं और सम्मान करते हैं। He is the chairman of JR Group, chairman and non-executive director of Aether Industries, chairman of Surat Textile Cooperative Bank and head of Pandisara Association। कमल जी को फेलिसिटेट करने बुलाना चाहूंगी निखिल जी और आनंद जी को। थैंक यू दादू, इट इज माई ऑनर टू हैव यू हियर। बुलाते हैं हमारे तीसरे चीफ गेस्ट को। वो एक ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने अपने फार साइटेड विजन और लीडरशिप से सूरत के व्यापार इकोसिस्टम को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुत किया है। पूरे सम्मान से उनका स्वागत करते हैं श्री गिरीश लूथरा जी का। उन्हें फेलिसिटेट करने बुलाना चाहूंगी निखिल मद्रासी जी और आनंद जी को। अंकल आए और कुछ 2 शब्द हमारे साथ कहे और हमारा हौसला बढ़ाए। गुड इवनिंग। खाने से पहले 8 बजे बोलना शायद हम सब स्पीकर्स के लिए चैलेंज है। खाली पेट समझ कुछ नहीं आती। Subject is interesting today, no doubt about it. And we all in India are growing pretty well financially. There are challenges which we all feel.
वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। JM Finance and उनके experts will talk more about the financial products, but as a industry on the other end, I can say that capital market is another route to a larger success when we talk about industrial houses. हम लोग सूरत में आदि हैं कि हमारा तो हो गया, हमने तो चला रहे हैं, अपना खुश है, अपनी तो नेटवर्थ है, जो एसेट माइनस लायबिलिटी अपनी नेटवर्थ है। फिर जब जेएम जैसे लोग आते हैं तो बोलते हैं तुम्हारी वर्थ तो उससे 5 गुना 10 गुना बड़ी है, तब समझ में आती है कि कुछ और भी होता है वैल्यूएशन। सो आई थिंक वी आर ऑल इन सूरत, वी शुड ओनली लुक एट ग्रोथ। हम अपने फ्रेंड्स को भी प्रोत्साहित करें कि आओ पब्लिक मनी में लेके काम किया जाए, बिजनेस किया जाए, बिजनेस बढ़ाया जाए। अल्टीमेटली द होल आइडिया ऑफ इन्वेस्टर मीट इज टू इंक्रीज बिजनेस। एंड आई वाज लाइटली टॉकिंग कि भगवान ने हर बंदे को नीचे किसी पर्टिकुलर वीजा के साथ भेजते हैं, तो वो हम लोगों को बिजनेस वीजा दिया गया है। कई लोग हैं जो आर्टिस्ट लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट वीजा है, वो लोग छुट्टी पे आए हैं। और देयर आर सम पीपल, हमारे निखिल जैसे जो लीडरी करने आए हैं, तो हर एक को एक अपना वीजा है। हमारा वीजा सिंपल है, काम करो, इकोनॉमी को ग्रो करो, सस्टेन द कंट्री, सस्टेन पीपल, सस्टेन योर ओन फैमिलीज। सो इंडिया इज ऑन अ लार्जर ग्रोथ, वी ऑल शुड बी पार्टिसिपेटिंग। With this, I will leave this to the better experts to talk about finance. Thank you. Thank you, Girish uncle, for those kind words and हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अब बुलाना चाहेंगे एक ऐसे उद्यमी को जिन्हें आज चीफ गेस्ट बनाना मेरे लिए एक ऑनर की बात है। बुलाना चाहूंगी चेयरमैन ऑफ एथर इंडस्ट्रीज श्री अश्विन देसाई जी को, जिन्होंने एक ऐसी ग्लोबल कंपनी का निर्माण किया है जिस पर पूरा भारत गर्व करता है। फेलिसिटेट करने के लिए बुलाना चाहूंगी श्री निखिल मद्रासी जी को और आनंद तुलसियान जी को। बुलाना चाहूंगी श्री बीजू दरीवाला जी को भी। Who is the honorary secretary of SGCCI? निवेदन करूंगी अश्विन अंकल आप आए और कुछ शब्द हमारे साथ शेयर करें। नमस्कार, गुड इवनिंग। जानवी को बोला भाई ये टेक्निकल आदमी को तुम फाइनेंशियल सब्जेक्ट पे कहाँ ले जा रहे हो, तो ठीक है, आप घर की बच्ची थी इसलिए ना भी नहीं बोल सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर taking a new stride in your career. We wish you all the best. निखिल जी और आपकी पूरी चैम्बर की टीम को बहुत बहुत अभिवादन कि आप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट वर्क फॉर द सिटी, फॉर द होल साउथ गुजरात। एंड लोगों को समझ में नहीं ये समझ नहीं रहे होंगे, पर आप जो काम कर रहे हैं, चैम्बर जो काम करता है, इट इज रियल सेंस डूइंग अ ग्रेट वर्क and you are doing one of the most wonderful work. 400 प्रोग्राम करते पूरे साल में, 300-400 क्या करते मालूम नहीं, घर में कितनी डांट सुननी पड़ती होगी वो जाना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हमारी बेस्ट विशेस टू यू। आज का जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैटर, इट इज मोस्ट पर्टिनेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट बिकॉज वर्ल्ड इज इन एब्सोल्यूट टर्मोइल. Businesses are going to be in absolute turmoil, and changing global landscape is the apt subject for today's thing. Good speakers are going to talk on the subject and we are going to listen to them. But एक ही चीज़ है जिंदगी में कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। समय के साथ बदलते रहो,
अपने आप को डालते रहो, अडेप्ट, चेंज, एंड यू विल सर्वाइव. सो टुडे द मोड इज ऑफ सर्वाइवल. आज का जो टाइम है वो सर्वाइवल का है सबके लिए. वो अपन इफ यू कैन सर्वाइव, गो नेविगेट दिस डिफिकल्ट टाइम of business, of changing world, then it opens up doors of opportunity also for us. So we have to look at with the approach where we adopt to this situation so that we can get into a better time in future. So my best wishes to Janvi again, and all the best for the. We look forward to have a very good lesson from the eminent speakers. And financial institution जो है, जो GM Finance worker, they guide you how to get into a next phase of your life in business. क्या होता है, अपन अपने अपने दायरे में सीमित रहते हैं, तो दायरे में अपन एक लिमिट तक जा सकते हैं. आप 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, समझो 15% अच्छा पैट है आपका. 15% में आपको क्या मिलता है? 150 करोड़ मिलता है. 150 करोड़ में कौन सा प्लांट खड़ा होता है? दैट मीन्स यू विल कीप ऑन बोरोइंग. अब आज इंटरेस्ट रेट इतना हाई है, तो वेर यू स्टैंड अप. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस पीपल टेल यू दैट व्हाट यू आर वर्थ. जैसे गिरीश भाई ने बोला, और वो वर्थ को समझाने के लिए दिस आर द एक्सपर्ट्स हु टेल यू हाउ टू डू. सो इन बिजनेस MBA नहीं चलेगा, दैट इज મને બધું આવડે છે નહીં ચાલશે. You need to have an expert who guide you, who takes you to the next level, and therefore we have to respect them, and we have to take them help of them, and these are the people who are experts, and they take you to the world level. तुम्हारा फलक बदल देते हैं काम करने का, सोचने का, और तुम्हारी हैसियत क्या है बताते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट्स. इसलिए we are thankful to them that these people are the ones who are helping us to take us to a bigger level, and we look forward to their talk. Thank you very much. Thank you. थैंक यू अश्विन अंकल, आप आए और हमारा हौसला बढ़ाया. थैंक यू सो मच. अब हमारे बीच एक ऐसे एस्टीम गेस्ट है जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे, जिनका नाम है राकेश सरावगी, चेयरमैन ऑफ लक्ष्मीपति. आइए. थैंक यू सो मच अंकल, आप आए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया. मैं बुलाना चाहूंगी श्री आनंद तुलसियान जी और निखिल मद्रासी जी को. राकेश अंकल को फेलिसिटेट करेंगे. जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं. थैंक यू अंकल फॉर कमिंग. हमारे बीच एक अलग ही उद्यमी है हमारे साथ, उनका नाम है विशाल जरीवाला जी, कलरटेक्स से. थैंक यू सो मच अंकल फॉर कमिंग. आइए प्लीज. बुलाना चाहूंगी श्री निखिल मद्रासी जी और आनंद तुलसियान जी को. उनको रिस्पेक्टफुली और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं. थैंक यू अंकल सो मच फॉर कमिंग. अब समय आ गया है हमारे आज के प्रमुख स्पीकर को इस मंच पे आमंत्रित करने का, जिनके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं. हम सभी ये जानते हैं कि आज का समय कैपिटल मार्केट्स के लिए अनसर्टन है. इस वॉलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट में सभी के मन में ये सवाल होगा कि पैसा कैसे बनेगा. 20-30% रिटर्न जो पहले बन जाता था वो आज के दिन पे पॉसिबल है या नहीं. क्या हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं. ये सारे प्रश्नों का उत्तर देने और पहली बार हमारे समक्ष हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स देने बुलाना चाहूंगी जेएम फाइनेंस प्राइवेट वेल्थ
सेगमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट्स श्री मनीष गर्ग जी को उन्हें फेलिसिटेट करना चाहेंगे श्री निखिल मद्रासी जी। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मनीष गर्ग जी का, आज के हमारे एस्टीम स्पीकर और गेस्ट। 20 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है ग्लोबल मार्केट्स में। कई फैमिली ऑफिसेस के साथ ये पर्सनली काम कर चुके हैं और उनका मार्गदर्शन कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट्स के सेगमेंट में। Manish, the stage is all yours. Please come. Thank you for calling us for this big event. So while we have a presentation, but मैं try करूँगा जितना मैं freewheeling रख सकूँ, because obviously इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, किसी भी presentation का कोई sense नहीं बनता, because overnight पूरी situation change हो जाती है आजकल. So that's where बहुत difficult है कुछ भी market के बारे में बात करना इस वक्त. But so I'll just start with what is JM Financial. A lot of people will know about JM Financial. JM Financial निमिश भाई कंपनी ने स्थापित की थी about 60 years back. One of the largest investment banking company in India, and as Luthra sir alluded to, one of the biggest investment bank means that to get companies to IPOs. That is one of the biggest strength of JM Financial. And JM Financial in 2025, just to give everyone a perspective, was the largest, not even by far the largest money raiser in India. We raised about 1,50,000 crores for various companies through IPOs, OFS, and various shapes and forms. And we were also the number one banker to almost 64 companies who raised money in form of IPOs. And that is, ये strength कहाँ से आ रही है? ये निमिश भाई के एक निमिश भाई and उनकी फैमिली के विजन से आ रही है कि कैसे कंपनीज के संग वर्क करना है लॉन्ग टर्म बेसिस पे to get them to IPOs and get them to entire financial closure. So हम एक इकोसिस्टम के जैसे काम करते हैं. So whenever companies come to us, we don't go for an IPO immediately कि 6 महीने में IPO करना है, साल भर में IPO करना है. Most of the companies do it like that, but JM का ecosystem ऐसे काम ही नहीं करता. So JM ecosystem start working with company 3 years, 4 years before the IPO actually comes in, and then we do a lot of work with them to build them, make them IPO ready. कि कंपनी के पास डेट कितना है, इक्विटी कितना है, डेट को अगर चेंज करना है, कैसे डेट की नेटवर्थ को चेंज करना है, कहाँ प्राइवेट मार्केट्स में पैसा रेज करना है. सो दैट्स वेयर द वेल्थ मैनेजमेंट कम्स इन कि हम lot of large families work with us to raise private capital today. How to change that private capital into an IPO 3 years down the line. किसी कंपनी को प्राइवेट क्रेडिट रेज करना है because credit is also very very large now. So like that we work with various companies and हमने within JM ecosystem के various kind of products बनाए to help these kind of companies raise capital in various shapes and form over their 3 to 4 year journey and the IPO mandates. Once the IPOs are done, JM runs that IPO in distribution. JM also takes care of the entire marketing of that IPO. And then when the event has happened, how the future strategy, because we are also one of the largest institutional equity desk in this country. So आज जितने भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, they all buy research. They all go by someone else's research. And that research, JM Financial has been phenomenal in providing that research. And today, FIIs, mutual funds, insurance companies, large financial institutions, everyone goes with JM institutional equities की research के संग. So we work with the company कि बस listing हो गई आपकी, उसके बाद how do we promote that company to the next level.
and how do we get the promoter who has done that entire liquidity event, how to manage their wealth, and that is also a part of the ingredient. So entire end-to-end journey में JM Financial participate करता है, इसीलिए इंडिया के इस वक्त largest families work with us, and touch wood, we have been very successful in last 65 years doing that, and we want to continue. We want to participate with you. हमारा बहुत सूरत में इस वक्त limited presence है, but with these kind of a event, we want to increase our presence, and we want to connect on various shapes and form with you. So, while there is a lot of data on these slides, but I will not talk so much. But as I said, investment banking to institutional equity to investment services to asset management, all solutions which HNI, large families, large businesses are looking at is available with JM right now. JM private wealth business कितना बड़ा है? We have a 1,50,000 crore AUM company right now. That is the JM private wealth. जिस division को मैं represent कर रहा हूँ आज. We are 1,50,000 crore division. India की one of the 3,000 large families bank with us right now. उनका end-to-end wealth management India में plus overseas. So we have a division in Singapore as well, which it manages lot of overseas money also for these families. Because global diversification is one of the biggest need of the hour right now, and a lot of these families are sending their money through LRS, OPI route, ODI route to invest in global assets, and that's where we have a fully owned subsidiary in Singapore to manage that. We are now in process of putting up a office in Dubai as well. However, obviously, whatever is going on, that may delay that a bit. But yes, we are committed to manage your wealth end to end, and that's what our expertise is in. Okay. आज का big topic और big question obviously है कि what's going on in markets में market में क्या हो रहा है. You know equities, lot of you know equities far better than us, but I will just start my talk on market with just first very old vintage line which once upon a time was defined the markets. When everyone is greedy, be fearful. When everyone is fearful, be greedy. In a very simple words, जब बाजार सबको लग रहा था 26,000 हो गया था मार्केट लास्ट ईयर 2024 सितंबर में, एवरीवन थॉट कि बस आज ही मार्केट 35,000 हो जाएगा. सेंसेक्स जो उस वक्त 85,000 था, ये तो 1 लाख का ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा. सेम चीज हुई हमारे संग गोल्ड में, सेम चीज हुई हमारे संग सिल्वर में. Everyone thought कि these levels will never be achieved, and everyone rushed into these things. But everyone was greedy at that point of time. So that is a time to be fearful. And today it's a completely different scenario. People are fearful. People don't want to invest right now. But this is the right time to invest. And obviously, geopolitical risks are very high. And someone who is leading the free world, as it's always said, President of United States leads the free world. And we have a I would not mince my word, but it's a madman over there. And which side of bed he rises every day morning, he decides and he takes decisions which impacts all our lives right now. And that's what it is. But from a India perspective, my only submission is that India is in a very good situation. We have one of the most stable governments in the world right now. We have a vibrant democracy. We have a demographic dividend, which is जो हमारी population है, हमारी young population है, हमारी population की English सीखने की क्षमता जो है, and they are very well educated people. That takes us to our next level. Our macroeconomic situation is looking very healthy right now. However, a lot of questions can come up that our macroeconomic situation can deteriorate very fast with oil at these levels, which is absolutely right because we are the very heavy importers of oil and gas, and both oil and gas is right now stuck. Strait of Hormuz, everyone knows, is governed by Iran right now. Strait of Hormuz is closed.
20% of global oil supply comes through Strait of Hormuz. 40% of gas supplies come through that small strait, and that is creating the entire panic around the world right now. But from a long-term perspective, as I said, right now that fear factor is there, but it is right time to invest, build long-term portfolios. Equities is always for long-term; it's never should be invested in a short-term perspective. Just to give everyone a perspective कि हम 2024 में जो हमारा पीक हुआ था, हम उस वक्त कहाँ थे? तो if you see, okay, so I'll just say निफ्टी का टॉप था 26,100-200 पॉइंट का. उस वक्त हमारा पी जो लॉन्ग टर्म पी था वो 24 का पी था. पी इज बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो कि पर शेयर हम कितना कमाते हैं. हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज ऑलमोस्ट निफ्टी के लिए 24.8 के आसपास रहता है, which shows कि that time obviously market was pricey from a long term perspective, and today while we see कि आज market उस लेवल से 10% नीचे है. 10% is a very healthy correction for that matter, but the point is कि हमारा P ratio उस पॉइंट से इस वक्त 16 टाइम नीचे है, 16% नीचे है, 17% नीचे है. तो हमारा करेक्शन है निफ्टी का वो आज 10% नहीं है, वो हमारा करेक्शन ऑलमोस्ट 36% का करेक्शन है, क्योंकि सेम टाइम में हमारा ईपीएस 6.3% से ग्रो हो गया, which is same is the case with mid cap, same is the case with small caps. Small caps और mid caps में अर्निंग ग्रोथ काफी ज्यादा तेज रही है, बट क्या ये स्टिल सही समय है? May or may not be, obviously because of the current situation, but long term planning के लिए, long term investment के लिए क्या सही समय? Absolutely it's a right time. So if you see on the right, we have also pointed out हमारे long term averages क्या रहे हैं P multiples के लिए, जो कि एक दर्शाता है कि मार्केट कितना एक्सपेंसिव है या चीप है. आज हम सारे बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म मल्टीपल्स से नीचे आ रहे हैं, and that clearly shows it's a very good time to invest. However, given this current situation and what we strongly think, this current situation has to change, because this can't continue, and we think that it will change because United States also needs the exit to this war right now, because they never thought that Iran will fight back so hard. They always thought that they will go into this war, they will take that oil, they will come to negotiating table, and the entire oil max will be agreed. But that is not happening. Iran is fighting back, and इस war का एक जो genesis है वो पेट्रोडॉलर हेजेमनी है. So इस war का किसी चीज से भी सबको लगता है कि न्यूक्लियर वेपन से लेना देना है, मिसाइल से लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं है. ये केवल और केवल पेट्रोडॉलर हेजेमनी है. जस्ट टू टेल एवरीवन कि पेट्रोडॉलर हेजेमनी क्या थी. वर्ल्ड में आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरेबिया के संग 1973 में एक ट्रीटी की थी कि बॉस दुनिया में जितना भी पेट्रोल का व्यापार होगा, तेल का व्यापार होगा, वो केवल डॉलर्स में होगा. And that's how that petrodollar hegemony was established. And the countries which came into petrodollar hegemony are extremely rich countries today. Qatar and UAE, Saudi Arabia, everyone. Anyone who questioned that petrodollar hegemony is in very bad shape, because obviously United States governed everything on the petrodollar hegemony. And this petrodollar hegemony was being questioned for the first time ever, because रशिया ने रूबल्स में ऑयल ट्रेड करना चालू कर दिया था, चाइना ने युआन में ट्रेड करना चालू कर दिया था, इंडिया टू सम एक्सटेंट रूपी में ट्रेड कर रहा था. एंड दैट्स वेयर टू रीएस्टैब्लिश दैट पेट्रोडॉलर हेजेमनी the regime change in Venezuela was done, the regime change in Iran was critical, and then obviously आपने जब Venezuela has lot of oil, but Venezuelan oil is very tough to refine. And Venezuelan oil का बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इतना गाढ़ा है कि उसको रिफाइन करने की कैपेसिटी अमेरिका में है ही, क्योंकि अमेरिकन्स को बहुत क्लीन ऑयल की आदत पड़ गई है इतने सालों में.
तो एक्सॉन मोबिल, शेल, इनके पास वेज ही नहीं है उस ऑयल को रिफाइन करने के। वो वेज कहां से आएंगे? उसमें सबसे बड़ी एडवांटेज थी कि ईरान पे they needed Iranian oil because Iranian oil is one of the cleanest oil in the world. So they need to brought that two category of oils together to refine it very efficiently. And that is one of the big genesis of this war. And to an extent, country like India is going to benefit from a long-term perspective on this piece because India was at the time buying Venezuelan oil, plus India has been buying Russian oil as well. So the refineries like Reliance has built that capability to refine the viscosity of the oil, that hard oil which is there, which is called the SAR oil. India ने वो capabilities build की हैं. So that's where India is, from a long-term perspective, is going to achieve a lot with these things. Obviously, Iran and Venezuela both are very, very large oil producers. उनका oil अगर normal markets में आता है, so that is also very, very beneficial to India from a long-term perspective. So while there is a short-term pain in this market, but from a long-term perspective, with these valuations and with this oil dynamics going to change in next 2 to 3 months, we are not in a bad place, and that's what we have to see and start building long-term portfolios. अब long-term portfolios, a lot of people ask कि बस 6 महीने में क्या होगा? Equities के लिए 6 महीने का जवाब देना बहुत बहुत मुश्किल होता है। आज हम 18 महीने से हम नेगेटिव रिटर्न पे हैं। हम ग्लोबल पीयर्स से अगर हम चेक करेंगे तो हम वहां भी नेगेटिव रिटर्न्स पे हैं। बट जिस टाइम पे भी वॉर्स हुए हैं, so if you see any kind of war, be it Kargil war, Iraq war, Russia-Ukraine war, when the markets have corrected very sharply, we have not even reversed that correction, but we have bounced back also very, very sharply. So that is clearly shows that when the fear sets in, that's the right time to come to markets. But this war is a very different kind of war. So any kind of investment, if आज आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी मार्केट्स में, you should invest over 3 to 4 months or even 5 months. That is the best time to invest, and this money should be seen from at least 3 to 5 year perspective. And that again, I will just showcase कि हम जब 18 महीने के पॉसेस में गए हैं, जब भी सेंसेक्स 18 महीने के पॉसेस में गया है, सेंसेक्स और निफ्टी मल्टीपल टाइम्स 18 महीने के पॉजेस में गए हैं। इफ यू सी, हम जुलाई 2001 से दिसंबर 2002 तक भी एकदम पॉज में थे, एंड ऑल दीज सिनेरियोज आर व्हेन वी वर इन 18 मंथ काइंड ऑफ पॉजेस, एंड 18 मंथ इज अ पॉज पीरियड फॉर इंडिया व्हिच इज हैपेंड वेरी फ्रीक्वेंटली फॉर इंडिया। बट उसके बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स, नेक्स्ट 36 मंथ्स रिटर्न्स फॉर इंडिया has been very, very good at most of the times. So if you see, especially मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा 30 अप्रैल से 30 सितंबर 2012 वाला पीरियड, जब हम 18 महीने के पॉज पीरियड में थे, हमारा 12 महीने का रिटर्न वहां से भी 1% था, लेकिन हमारा 36 मंथ रिटर्न वहां से 39% रहा, and these are CAGR figures. So this is a very, very good time from a long-term investing perspective. And that should be our motto, and we are in a very, very good place. Obviously, if this war continues for some more time, then yes, oil dynamics changes, macroeconomics changes. So this view may not be hold good, say if this war continues for another 2 months. But our sense is that this war obviously needs to be halted, and there is huge amount of pressure on United States to halt this war. And that's where once this war stops, the oil comes back to its normal levels, and we will be in a very good shape. I will just talk about this. India हमेशा एक emerging markets के against एक premium पे रहा है हमेशा, because India हमेशा एक बहुत fastest growing economy रहा है पिछले almost 20 years से. Till 2006, like China started growing very, very fast in somewhere in about
1980s. They led it till 2006-2007. From 2006 onwards, India has been one of the fastest growing economies in the world, and that's why we have always been on a premium to emerging markets. That premium, this 18-month pause has completely taken off that premium. And we are now 10% discount to the emerging markets. So that is also a very good long-term indicator that time for India is coming back. Two more points I will make over here is, one is obviously lot of money in last 2 years went to companies which were innovating very fast, especially AI-based innovation जो companies कर रही थी, and that's where if you see markets like Korea, markets like China, इनमें last 12-18 महीने में बहुत तेजी रही. Nvidia का market cap आज $4 trillion का, हमारे पूरे market cap का $4 trillion market cap नहीं है. So AI trade has become a $30 trillion trade now in the world, and obviously lot of people are started understanding AI trade now. उसके अंदर AI trade में बहुत issues हैं. AI का obviously AI needs lot of data centers, lot of energy. People are realizing that. Lot of people are not realizing that as well. So my only submission is that AI will astonish or amaze people who think AI will not do well, and it will also astonish and amaze people who think AI will just create a very different world in next 5 years. So AI is going to amaze everyone, but services कल नहीं बंद हो रही है. आज जिस तरह के Infosys, TCS जैसी कंपनीज कल नहीं बंद हो रही है. इन्होंने 20 साल 25 साल में ये बिजनेसेस बिल्ड किए हैं. These companies are not going to shut down like overnight. उनकी ग्रोथ रेट्स में प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी. They are innovating, yes, definitely they are innovating. GCCs जो ग्लोबल कंपनीज के ऑफिसेज इस वक्त इंडिया में आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा हमारा ग्रोथ फैक्टर है, they will not go off like that. आज कंपनीज like Amazon, Google, Meta, everyone is establishing huge amount of offices in India. My old company, HSBC is for India perspective, HSBC has 40,000 employees in India because they are doing the global work. They are not, so India employees are just 3,000, but global employees are 40,000 employees are there in India. That shows that because of our demographic dividend, our eagerness to learn, our tech capabilities all are far superior than the world. And that's where these companies will not abandon India just like that, what the doomsday scenario all the AI world is creating right now. And that AI trade has started dwindling a bit, and very, very small amount of money comes out of this trade. It will need to come to country like India because today there is no other trade in the world. China is an extremely good market, but it's a very untransparent market. So the whites which rule the world right now will not go to China so easily. They will need to come to country like India. They will need to come back to country like India, and that's where all the factors which are there right now are completely set, and we should look at building our long-term portfolios from India now. Obviously, lot of questions keeps coming on gold. That's why we thought we will speak about gold as well. Gold obviously has given a phenomenal return, and a lot of people think that why do equities when gold can give such a return? But gold की भी अपने ups and downs रहते हैं. Gold अभी भी एक बहुत अच्छा asset class है. गोल्ड में तेजी क्यों आई, उसका एक जस्ट छोटा रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा. बेसिकली जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ 21 में, द फर्स्ट थिंग यूएस डिड इज कट ऑफ रशिया फ्रॉम द स्विफ्ट नेटवर्क. स्विफ्ट इज रिक्वायर्ड. आपको कोई भी ग्लोबल रेमिटेंसेस, ग्लोबल पैसा ट्रांसफर करना है, आपको स्विफ्ट चाहिए. पहला उन्होंने उनको स्विफ्ट से कट ऑफ कर दिया. दूसरा, उन्होंने उनका जितना भी पैसा बाहर के बैंकों में जमा था, उनका गोल्ड जो बाहर के बैंकों में जमा था, वो फ्रीज कर दिया. एंड दैट वैल्यू व्हिच वाज देयर वाज फ्रोजन, वाज
and tune of like 300 to 500 billion dollars, which made countries like China and India think, "Ki boss, is it worthwhile to keep this money in US treasuries?" Because US was the everything that time. Because हमें डॉलर चाहिए था, हम डॉलर में रखते थे सारा पैसा. डॉलर में पैसा कैसे रखना है? US ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर लो, 2% का बॉन्ड है, उसमें आपका डॉलर में पैसा है. And that is where the gold rally started, because countries like China and India decided कि boss, इस पैसे को change करो. We don't need dollars, we need gold. Gold will be a solid asset. And that gold which was stored earlier in treasuries of United Kingdom, Switzerland, they also said because these shipments have to be in India and this has to be in China. So today, if you see, RBI is not only buying gold, but they are shipping back all their gold from London treasuries, Switzerland treasuries to Indian treasuries now. So gold, इसीलिए that is a very very stable asset class from a next 3 to 4 year perspective. Just to give everyone a little perspective again, हमारे पास आज जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसका 12 से 14% इस वक्त गोल्ड में आ गया है. हम ये करीब 20 से 22% तक जाएंगे हम मिनिमम. चाइना, डिस्पाइट बाइंग सो मच गोल्ड, is at about 6-7% because their foreign exchange reserve was very very large. So they will need to keep buying gold, and that's where gold from a 3 to 5 year perspective again is a great asset class to be in. And gold, that's why, will continue to do very well. Silver on that hand may not do very well because silver में एक speculation आ गया है. So सिल्वर की स्टोरी जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड स्टोरी थी कि आपको ईवीज बनाने हैं, आपको सेमीकंडक्टर्स बनाने हैं, आपको चिप्स बनाने हैं, आपको सोलर पैनल्स बनाने हैं, सब में आपको सिल्वर चाहिए. सो सिल्वर की डिमांड वेंट हाई, वैल्यूएशन वाज हाई, बट एक वो $64 के बाद उसमें एक स्पेकुलेशन चालू हो गया जिसने वो $64 को $120 बना दिया सडनली. और वो 64 से आज 80 पे है, 80 पे वो फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत. बट आज भी वो स्पेकुलेशन डिमांड है, क्योंकि अगर वो $64 के ऊपर जो प्राइस है सिल्वर का, वो प्राइस सस्टेनेबल ही नहीं है ईवी इंडस्ट्री के लिए टू मेक है ना बैटरीज विद सिल्वर. दे विल डू समथिंग विद कॉपर, दे विल डू समथिंग विद अदर मेटल्स. सो सिल्वर मे नॉट बी अ ग्रेट प्लेस टू बी इन, बट गोल्ड डेफिनेटली इज अ ग्रेट प्लेस टू बी इन स्टिल. गोल्ड उस दिन बेचना जिस दिन हर मंथ एक नंबर पब्लिश होता है, आप वो नंबर ट्रैक कर सकते हैं गूगल पे, बहुत आसानी से मिल जाता है कि सेंट्रल बैंक्स कब हर महीने कितना गोल्ड खरीदते हैं. जिस दिन आपको लगे कि कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना हैव स्टॉप्ड बाइंग गोल्ड, आप उस दिन गोल्ड बेच दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. बट जब तक वो नंबर पॉजिटिव आ रहा है 5-7 टन every month, India is buying couple of tons, China is buying 7-8 tons. जब तक वो नंबर इस लेवल पे पॉजिटिव आ रहा है, जब तक गोल्ड इज एन एसेट क्लास, इज ग्रेट एसेट क्लास. तो हमारा व्यू जो मैंने सब एसेट क्लास पे हमारा व्यू बताया. If any questions, I can take that on markets right now, or I can take products first and then come to markets as you wish. So I will continue then. So I will just talk about few products. One of our big philosophies has been to get newer kind of products to our investors, because आज की तारीख में to buy mutual fund, buy normal PMSs, long only ETFs, direct equities, you can buy it anywhere and you can buy it through any means and shapes and form right now. That's why we think that there are different asset classes globally which should be brought to Indian investors, and we are trying to do that. There are some few products we have spoken about in this presentation which we think should be considered by investors like you. First product obviously is a foreign product which can be invested in dollars through our Singapore office. But you will say कि यार मैं तो इंडिया की इतनी अच्छी पिक्चर पेंट कर रहा था, why I am talking about a foreign product first? Because global diversification is also very very critical, and
obviously we have created a big gift city right here in Gujarat to promote that global diversification, to bring money in India and to get money outside India as well. So there are a lot of products which are getting now created to allow people like you to invest outside of India. There is LRS limits, 250,000 per PAN per year, which most of the large families have started using it. And this is one thematic product which we think is a game-changing product, and our investors have really benefited from it, and we thought we will speak about this product over here as well. This is a product called Valiant Power SPE. So यूएस में क्या हुआ है कि यूएस में जितना भी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस ने क्रिएट किया था वो 1960s में क्रिएट हो गया था, एंड दे हैड अ 50-year vision and they had created that infrastructure to support that completely. But AI के ऑनसेट ने उस पूरे गेम को चेंज कर दिया, बिकॉज टू जनरेट AI based solutions you need huge amount of power to generate. अब lot of people think कि हम बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, बट no one knows that एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए जितना हमारा घर शायद 7 या 8 साल में बिजली कंज्यूम करता है, जितनी बिजली चाहिए टू माइन वन बिटकॉइन. आज हम गूगल जेमिनी AI सब यूज करते हैं, हम उस पर जनरली एक क्वेरी डाल देते हैं कि बॉस है ना, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है. But to generate answer to that query, there are hundreds of servers which are running, and they need power, they need coolants, because coolant भी इतना important है, पानी चाहिए उसको ठंडा रखने के लिए. So US का पूरा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्रम्बल हो गया है इस डिमांड को मीट करने के लिए, and this fund is trying to invest in companies which are using to recreate that entire power infrastructure. I will just give a very small example. Microsoft टेक्सास में एक AI डेटा सेंटर क्रिएट कर रहा है. That डेटा सेंटर को जितनी बिजली चाहिए टू रन करने के लिए, टेक्सास में इतनी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ही नहीं है सर. पूरे टेक्सास में, टेक्सास इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. So they went to a company who had a nuclear power plant which was shut some 20 years back. They have entered into a contract with that company to restart that power plant just to provide energy for that data center. So that is the kind of energy which is required to run these data centers. And this fund is identified those companies who will help US create that infrastructure. And that's why this fund in last 1 year, despite entire world giving like 5, 7, 10% return, apart from AI, virtually nothing in old economy has given any returns. This fund has delivered like 65% US dollar return. And our owners invested personally in the fund to test it out, and then brought to our clients, and our clients are really happy with this fund. And we are very clear that once we think that valuation of such companies are achieved, we will close this fund as well. So this is not a fund which is open perpetually, but we think that is a great fund to invest in. Now this is our strength. So this again, craze of unlisted shares is very, very high right now. I'm 100% sure you will be owning NSC shares, you will be owning Tata Capital shares. Now it is listed obviously, but in some shape and form unlisted. OYO, Zecto, everything is available in market. But no one understands right now कि what's the valuation क्या है इस कंपनी का, क्योंकि कंपनी तो वो अनलिस्टेड शेयर बेच नहीं रही. वो तो PE फंड जिन्होंने 25 साल पहले इन्वेस्ट किया, 20 साल पहले इन्वेस्ट किया, वो अपना माल बेच के जाना चाहते हैं because they have to earn lot of money. So abnormal valuations पे आ रहे हैं आज काफी सारे अनलिस्टेड शेयर्स. टाटा कैपिटल इज अ क्लासिक एग्जांपल. टाटा कैपिटल का शेयर अनलिस्टेड शेयर ट्रेड हो रहा था 1000 से 1100 रुपए की रेंज में. आईपीओ आ गया 350 रुपए पे, आज 350 रुपए आईपीओ प्राइस पे ही है, एंड एवरीवन इज स्टक. रिलायंस रिटेल का शेयर
रिलायंस रिटेल अनलिस्टेड में ट्रेड हो रहा था 1100-1200 रुपए पे. Suddenly Reliance Industries said कि boss, we think the fair value of this share is 300 rupees. I will pay you 300 rupees and I am unlisting it. No share will be allowed. And they extinguished all the shares. And lot of HNIs like you lost a lot of money in that. So that's where we thought कि because हमारा एक IPO understanding बहुत high है, तो why not launch a pre-IPO fund where JM की research capability से एक फंड आएगा जिसमें केवल हम pre-IPO access देंगे हमारे इन्वेस्टर्स को एक pool of assets में, 10, 12, 15 कंपनीज में एक संग एक फंड में, जिससे कि आप जो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है अनलिस्टेड शेयर से वो भी अचीव हो, बट एक उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत हाई है क्योंकि जेएम एज अ हाउस इज डन द रिसर्च, प्लस सिंस वी आर इन्वेस्टिंग इन 10 to 15 कंपनीज, इवन इफ there is a valuation mismatch in 1 or 2 companies, but other companies will take care of it. And that's where we have launched a GM pre-IPO fund. While I will not waste your time because I don't want to stand between food and everyone at 8:30 in the night. But this is a fund from our GM house which has an expertise into IPOs. And that's why we should, आप सबसे गुजारिश रहेगी कि इस तरह के एक फंड को आप देखिए, चेक कीजिए, फंड मैनेजर से मिलिए टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस फंड. Similarly, I just quickly will speak about another JM fund, which is our real estate fund. आज रियल स्टेट, रेजिडेंशियल रियल स्टेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों प्री रेरा प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर सकते. सो अब क्या होता था, पहले के जमाने में क्या होता था कि जब ये बंद हुआ था 2022 में, तो उसके बाद भी बहुत लोग क्या करते थे कि एक रियल एस्टेट बिल्डर के पास जाएंगे कि आप यार आप मेरे दोस्त हो, ऐसा करो आप मेरे नाम पे 10 फ्लैट्स लिख दो एंड आई विल गिव यू 50 crores एज अ फाइनेंसिंग. एंड व्हेनेवर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एंड ऑल, तब रीफाइनेंस करके उसको बैक कर दो और वो फ्लैट्स मुझे सस्ते दाम पे मिल जाते थे. रेरा ने वो भी बंद कर दिया क्योंकि रेरा सेट की बॉस आप ना अलॉटमेंट लेटर, रेरा नंबर आने के पहले अलॉटमेंट लेटर ही नहीं मिल सकते. तो अगर आपका रियल एस्टेट में कोई फ्रेंड है, आप उसकी पर्ची पे विश्वास कर सकते हैं, तो प्लीज डू दैट. बट लॉट ऑफ HNIs, अल्ट्रा HNIs have stopped that business completely. So the segment which now SEBI and RBI allows to finance that part is an AI, alternate investment fund. एंड हमारी एनबीएफसी, जेएम की एनबीएफसी थी जो लास्ट 12 साल से ये बिजनेस रन कर रही थी, जब तक ये आरबीआई ने 2022 में बैन नहीं किया था. हमने 35,000 करोड़ की लेंडिंग की थी स्पेस में. एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड बिजनेस टू डू बिकॉज द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड, प्री-रेरा इज फाइनेंस्ड बाय द AIF or NBFC earlier. Now NBFCs are not allowed. Once RERA comes in, banks and large NBFCs come and refinance it. इस सेगमेंट में 3 बड़े सेगमेंट हैं जहां पर एक बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, जैसे कि आपके DLFs हैं, लोडा है बॉम्बे में, साउथ में प्रेस्टीज है. इन लोगों को पैसा मिलता है HDFC और कोटक से, और ये पैसा रेज होता है पूरा ओवरसीज, 10 से 12% की इंटरेस्ट रेट पे रेज होता है एंड दे गेट दिस एंटायर मनी फ्रॉम देम. बट देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ mid segment builders which have to raise money in India, and they have to raise money from, there were only 4 borrowers in that space. One was ASK which was doing through AIF, Motilal Oswal वो भी AIF के थ्रू कर रहा था, सुंदरम जो केवल साउथ के प्रोजेक्ट्स करते हैं वो भी AIF के रूप में कर रहा था, and JM was doing through NBFC. Now we are also launching our own AIF. And our expertise obviously is much higher than all 3 put together in mid segment, because all 3 put together in mid segment, which is Motilal, Sundaram and ASK, have done financing of 15,000 crores. We have done this business with 35,000 crores in last 12 years. And given our big expertise, we think that fund is a very good asset class to look at right now. And it is a very good diversification from an overall portfolio as well. And this is from a safety perspective also, these things are very, very high on our agenda. So the entire project is taken over by JM
before entire RERA thing happens. So the entire land is RERA application में JM का नाम होता है, land पे JM का नाम होता है, पूरा cash flow जो manage होता है जब तक आप बेचना चालू करते हो project का, जो भी आपके vendor payments होते हैं, that is signed off by JM. So from that perspective, it is very safety net on these senior secured debt इसे बोलते हैं, वो बहुत high है. So this is another fund from our staple. Then you will always question me because I'm here to talk about JM products, but we think there are other kind of products also which should be looked at by everyone, because आज हम या तो FD करते हैं या हम equities करते हैं, हम debt करना जानते नहीं है क्योंकि debt market इंडिया का बहुत shallow है, and that's where debt markets में now there are specialized fund managers who are coming into debt markets with specialized products, and that is also products which should be looked at by ultra HNIs like you, because the आप जितना multi asset portfolio create करेंगे जितना आपके लिए हेल्पफुल होगा इस तरह के टाइम्स में जब equities परफॉर्म नहीं करती है. एंड उसमें एक फंड है ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पास से, which is also an amazing product to manage that kind of risk. So this is a fund which invests only funding to NBFCs, which are high quality NBFCs, which are running entire cash flow based securitization होता है asset का, and then the entire lending to the investors, fundraise from the investors have. So that is, we think कि एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो इस वक्त की नीड है. इस टाइप के इंसिडेंट्स जिस वक्त जो चल रहे हैं, that will keep happening. Equities in India is a great asset class, gold is a great asset class, but debt is also a great asset class. Overseas equities also is a great asset class, because overseas आपको हर चीज के लिए आपके पास आपके पोर्टफोलियो में एलोकेशन होना पड़ेगा. And that's what I wanted to speak about various fund options. This is just to represent how multi-asset portfolios work and how multi-asset products work. This is not a product pitch which I am making, but these are the innovative products which are now available in market, which we think everyone should consider. And that was the whole idea of putting these products, different products over here. So that's where I would end, and I will urge everyone, if you have questions, I can answer. If there are any questions, we are happy to take. Any questions? Thank you so much, Manish. Thank you. I will be there. Yeah, he's here anyway. So Thank you. if anyone has any questions, we can have a one-on-one discussion with Manish Garji. Thank you everyone for inviting us over here. It was our pleasure to be part of this. थैंक यू मनीष जी, इतने डेप्थ में आपने मार्केट का ज्ञान दिया. शुक्रिया मुंबई से आने के लिए और हम सबको प्रकाशित करने के लिए इतने सारे इंसाइट्स के साथ. अगर किसी को आगे क्वेश्चंस नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहूँगी आशुतोष धूमल जी को, जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जेएम फाइनेंस, स्टेज पे. Hello everyone. Just make this quick in interest of time. First of all, thank you to SGCCI and Mr. Nikhil Madrasi for organizing such a fantastic event in such a beautiful setup. Eternally grateful to Mr. Anand Tulsiyan and Chanvi Tulsiyan for getting all these esteemed guests on the panel. So just wanted to say thank you to everyone. I would like to invite Mr. Miki Desai from Aditya Birla. They are our event partners. We work closely. So I would just want him to quickly speak about Aditya Birla, and then we can go on from here. Please come on stage. Thanks. Our well partner James. It reminds me of my old days. I started my career with
Surat only. In my early career, I just joined mutual fund in 2002, and right now, if we see the journey, what we were discussing about the global landscape, સુરતમાંથી જે શીખવા મળ્યું છે કોઈ દિવસ શીખવા મળી શકે એવું નથી. Today I am handling 45,000 crore of AUM at Aditya Birla Capital or Aditya Birla Mutual Fund for that matter. And when I joined mutual fund 2002 જ્યારે મેં જોઈન કર્યું એ ટાઈમમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે હમણાં આપણે જે અત્યારે ડિસ્કસ કરતા હતા, અશ્વિન સર વાત કરતા હતા, ગિરીશ સર વાત કરતા હતા, મને સુરત એટલા માટે યાદ આવે છે વધારે કે when I started my career, I was there at Ahmedabad. After that, I joined Surat, Luthra College. So we were just remembering that old days. So we used to visit various textile market and all. I would like to say, જે પણ ગ્લોબલ લેન્ડસ્કેપની વાત કરતા હતા આપણા સરે, મનીષ સરે બહુ ડિટેલમાં સમજાવ્યું આપણને, રાઈટ. સો એમની વાત કરતા અત્યારે બિરલા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વાત કરું તો અત્યારે વી હેવ 5 લાખ કરોડ માર્કેટ. અત્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વાત કરું તો 5 લાખ કરોડનું યુએમ છે. સો ઇન્ડિયન મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કોપ વાત કરી, એમણે રિયલ એસ્ટેટ એઆઈ પ્રોડક્ટની વાત કરી, એના સિવાય એસઆઈએફની વાત કરી, અત્યારે એસઆઈએફ આવી છે, રાઈટ. સો જે ગ્રોથની ગિરીશ સરે વાત કરી, ઇકોનોમીના ગ્રોથની વાત કરી, એટ ધ સેમ ટાઈમ દેસા સરે વાત કરી કે જે હુકા વર્ડ છે, વોલેટાલિટી, અનસર્ટેનિટી, કોમ્પ્લેક્સિટી, એમ્બિગ્યુટી, આ જે 4 વર્ડ છે ગ્લોબલ લેન્ડસ્કેપમાં જે વાત કરતા હતા સ્ટાર્ટિંગમાં, તો એ ટાઈમમાં ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડસ્ટ્રીનું જે હબ છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, તેવું 1995માં કુમાર મંગલ બિરલાજીએ એમની પાસે 150 યર્સની વેલ્થ ક્રિએશન હિસ્ટ્રી હતી, એન્ડ હિઝ એમ્બિશન ઇઝ ટુ ક્રિએટ વેલ્થ એટ ધ એવરી લેવલ. તો અત્યારે યુએસમાં તમે જાઓ તો યુએસની જે જીડીપી છે ને એના કરતાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું એમ 130%, અને ઇન્ડિયાનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું એમ કેટલું છે 21%. તો સ્ટીલ લોંગ વે ટુ ગો. ઇન્ડિયાની જે ટ્રિલિયન ઇકોનોમીમાં અત્યારે મોદીજી વાત કરતા હોય કે ટ્રિલિયન ઇકોનોમી, રાઈટ. સો અત્યારે આપણે સરે વાત કરી કે 4.5 ટ્રિલિયનમાં એનવીડિયાના સ્ટોકની વાત કરી, બરાબર. સો ટ્રિલિયન ઇકોનોમીમાં પણ અત્યારે આઈટીમાં અત્યારે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની પણ વાત કરી છે તો 480 લાખ કરોડની એવી તો માર્કેટ કેપ છે. ઘણીવાર આપણે જ્યારે અત્યારની વાત કરીએ આત્મનિર્ભર ભારત, રાઈટ. તો એસઆઈપીનું અત્યારે કેટલું છે ખબર? ઇન્ડિયામાં 32,000 કરોડની એસઆઈપી માર્કેટ કેપ છે. સો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં in India when it comes to the growth, GDP plus inflation plus fund manager ની 2 to 3% સ્કિલ છે. આવો સિમ્પલ આન્સર. અમે આલ્ફા બીટા જે બધા સોફિસ્ટિકેટેડ ટર્મ્સ યુઝ કરતા હોય છે પોર્ટફોલિયોમાં, બટ ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ધ ક્લાયન્ટ્સ રિટર્ન, વી ઓલવેઝ our promoter is endeavor is કે whatever may be the goal of child education, daughter marriage, retirement or any wealth ambitions, whether to appoint product manager at the various, you can say, industry, they are also doing SFP to hire sophisticated product managers. At the same time, જ્યારે હું સુરતમાં આવ્યો તો અત્યારે સુરતનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એવું છે કેટલું ખ્યાલ છે આશરે? કેન આઈ હેવ વાઇલ્ડ ગેસ? અત્યારે આપણું 80 લાખ કરોડનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. ઓલ્ટરનેટમાં 45,000 કરોડ છે. જે સર વાત કરતા હતા એએફની વાત કરતા હતા, he was just discussing about sophisticated product like AF. જ્યારે વિશાલ સર આવ્યા અમે બહાર વાત કરતા હતા, we were just interacting about senior secured debt, the products which are now into AF, which will generate capital plus minimum quarterly returns. At the same time, you are just partners to the, you can say, real estate people, where in the NCD form where you are getting 16% kind of return with the quarterly dividend. So such tools have also developed over a period of time. So thanks Janvi ma'am, thanks Tulsian sir કે જેમણે આનંદ સરે કીધું કે this is what we have been organizing. Birla Mutual Fund નો we have also Gift City with us. We are the first one to launch Gift City. તો ગિફ્ટ સિટીમાં પણ અમારા ઘણા પ્રોડક્ટ છે જેમાં 60% રિટર્ન્સ છે. જેમાં અત્યારે જીડીપીની વાત કરીએ, ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની વાત કરીએ તો વી વર જસ્ટ ડિસ્કસિંગ વિથ ગિરીશ સર ઇન ધ બિગિનિંગ કે આપણે ત્યાં સૂચિ સોમિકોમ કરીને એક સેમિકન્ડક્ટરની કંપની આવે. જ્યારે આટલા ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી હોય તો પહેલામાં પેલું એ વિચારવું પડે કે વર્લ્ડની ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની સામે હજુ આપણે 21 ટ્રિલિયન યુએસનું છે, હજુ 4.5 ટ્રિલિયન છે. ધેર ઇઝ અ લોંગ વે ટુ ગો. અને માર્કેટ કેપ જે આપણે વાત કરીએ 480 લાખ કરોડ, સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં આટલા ટ્રિલિયનની વાત કરીએ તો 480 લાખ કરોડ. 3 વર્ષ પહેલા પેટીએમ આવ્યું, ડેટા બિઝનેસ એનાલિટિક્સ. આપણે અત્યારે ગૂગલ, ફેસબુક એ વાપરીએ છીએ. આપણે તો ઇન્સ્ટેન્ટ સ્ટોક છે કોઈ બીનો, ગૂગલનો કે એનો ઇન્ડિયામાં હજુ પણ આટલું છે પછી નથી. 2 વર્ષ પહેલા આપણે વાત કરતા હતા ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ. અત્યારે મારું જે હોમટાઉન છે ત્યાં મારી 100 વીઘા જમીન છે. અત્યારે વારી હેઝ ટેકન ઇટ ઓવર. તો ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની સરે વાત કરી કે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં વી હેવ જનરેટેડ ગુડ રિટર્ન. તો દેર ઇઝ અ ટ્રેમેન્ડસ ગ્રોથ ફોર ઇન્ડિયન ઇકોનોમી અને આનું ફાઇનાન્સ આપણે કરી રહ્યા છીએ. અત્યારે સુરતમાં આપણે બિલીવ નહીં કરીએ 60,000 કરોડનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એવું થયું છે, 60,000 કરોડ.
અત્યારે એસઆઈપી બુક છે, આપણે ઘણી વાર કહેતા કે એફઆઈઆર પર આપણે ડિપેન્ડન્ટ નથી. 32,000 કરોડ આપણી એસઆઈપી ની બુક જ થઈ ગઈ છે ઇન્ડિયન માર્કેટ, રાઈટ. ભલે અત્યારે ફોલ થયું છે ક્રૂડને લીધે, પણ તમે યાદ રાખો મારી પાસે ચાર્ટ છે ક્રૂડમાં કે જ્યારે પણ વોર થાય એના 3 વર્ષ વેલ્થ ક્રિએશન હંમેશા 15 થી 18% વચ્ચે મિનિમમ કેગરમાં થયું. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ હિસ્ટ્રી. કારણ કે ક્રૂડ થાય, રિસોર્સ જનરેટ થાય, એ આખા સ્પ્રેડ થાય એક્રોસ ધ વર્લ્ડ, એન્ડ દેટ ઇઝ ધ ઇન્કમ. કારણ કે ઇન્કમ જરૂરી છે, અર્નિંગ છે. પીએસ ને પી ની વાત કરતા હતા, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ધેર. સો બિરલા હેઝ ગોટ અ fund management team of 35 team members, at the same time 16 analysts, and along with JM આપણે ઘણા જે વેલ પાર્ટનર્સ ઇવેન્ટ કરતા હોય એના માટે અમે ઘણી વિઝિટ્સ ગોઠવતા હોય ઇન્ડસ્ટ્રીઝની પણ એમની, whether it's a gift city head office visit, with the help of Janvi ma'am we will surely arrange that various visits. કારણ કે આમાં ઘણા ટેક્સટાઇલમાં હશે, ઘણા કેમિકલમાં હશે, જેમ કે સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સ જે લાસ્ટ 2 વર્ષમાં જીડીપી વધવા માટે શું કામ કર્યું, સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ્સ. અત્યારે લિથિયમની વાત થઈ, બરોડામાં એક કંપની છે રૂબાની, લિથિયમ ખાલી જથ્થો ચાઇના પાસે, બરાબર. લિથિયમમાં બેટરીઝ છે, તો આપણે ત્યાં લિસ્ટેડ એન્ટિટી કેટલી, જે મેં સૂચિ સેમિકોમ કીધી એવી અમને ગિફ્ટ સિટીમાં અમે સેમિકન્ડક્ટરની પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરેલી. સેમિકન્ડક્ટરને બાયડુઝ ને બધામાં એમાં તમને કીધું 60% રિટર્ન. પણ આર વી અવેર અબાઉટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ બીકોઝ ધીસ આર વી હેવ નાઉ નોટ ઓનલી કોર્પોરેટ્સ એન્ડ HNIs, વી હેવ ગોટ ફેમિલી ઓફિસ વિધિન અસ. જ્યારે સર સાથે વાત કરતા હતા અમે તો કે અમારી પાસે ફેમિલી ઓફિસ બી છે. તમે બેંગ્લોર જાઓ તો ત્યાં હાઈએસ્ટ ફેમિલી ઓફિસ છે. લાસ્ટ યર પ્રમોટર્સે જે શેરમાં લિસ્ટિંગ હાઈએસ્ટ સાઉથમાં હતું, અત્યારે આપણે એ જ વસ્તુ વેસ્ટમાં જોઈ રહ્યા છીએ. there is a tendency towards investment. સાઉથમાં જાઓ તો ગોલ્ડ તરફ ઇન્ક્લિનેશન છે, નોર્થમાં જાઓ તો તમને જેઝી લુક જોઈએ, રિયલ એસ્ટેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય, વેસ્ટ આપણે તો પેપરમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ, રાઈટ. પેપર્સ એટલે કે જ્યાં આપણને 12%, 15%, 18% મળતા હોય, 22% મળતા હોય એવા કમ્પાઉન્ડિંગ વાળા દરમાં રોકીએ છીએ. તો વેસ્ટમાં પણ હવે લિસ્ટિંગ ઘણું થવા માંડ્યું છે. આપણે અહીંયા સુરતમાં બી ઘણી કંપની લિસ્ટેડ થાય છે. જેમ હું જ્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોડાયો તો કે 3 કે ફેમસ છે. હુ આર ધ 3 કે? તો 2005 કે કામત, કંપાની, કોઠારી, હેમેન્દ્ર કોઠારી ડીએસપી, જેએમ વાળા નિમેશભાઈ has given me job at that time 2002માં. these are the 3 કે. પછી in 2007 I joined Kotak, બિરલા, ટાટા, રિલાયન્સ બધા ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કેમ આવ્યા? વી ડિડન્ટ ગેટ ધ બેન્કિંગ લાયસન્સ. બિરલાને લાયસન્સ મળ્યું, બેન્કિંગનું નહીં મળ્યું. રઘુરામ રાજનજી હતા, ટાટાને મળ્યું, નહીં મળ્યું. રિલાયન્સને મળ્યું. કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ હોય એ જો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવે ને તો જે સિક્યુરિટી જોવી જોઈએ ને એ નહીં જળવાતો. સો વી ડિડન્ટ ગેટ ધ બેન્કિંગ લાયસન્સ. પણ અત્યારે બિરલાની વાત કરું, સો બિરલા ઇઝ ઇન્ટુ આદિત્ય બિરલા કેપિટલ કમ્સ ટુ, we are into investment, we are into financing, NBFC sponsored. As we didn't get the banking license, Kumar Mangal Birla ji, we started Aditya Birla Capital. So let's ensure જે પ્રોટેક્શન છે, ઇન્સ્યોરન્સ, GI, ફાઇનાન્સિંગ, બધાને ફાઇનાન્સિંગ જરૂરી. ઘણી વસ્તુમાં બેંક લેન્ડ નહીં કરતી હોય રિયલ એસ્ટેટમાં. So we have got NBFC also. Third is the banking, finance, એના સિવાય ઇન્સ્યોરન્સ. So protection, investment and financing, and all 3 require advisory. And જાનવી મેમ જે એમણે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે 2 ઇનિશિયલ સ્ટાર્ટઅપ એમણે લોન્ચ કર્યા હતા. નાઉ શી હેઝ બીન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ ઇન ટુ બ્રિંગિંગ ધ બોમ્બે, જેમ આપણે ડાયમંડ હબ જે આપણે લોન્ચ કરીએ છીએ, કર્યું છે હમણાં, કે જે આપણે નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જવાનું છે, બરાબર છે. ગિફ્ટ સિટીમાં મોદીજી, તમે માનો નહીં 3-5 વર્ષ પહેલા ગિફ્ટ સિટીમાં એને સિંગાપોર કે આપણું જો ગિફ્ટ સિટીનું હમણાં તો એક અલગ પેલું જ આવે છે, તમને ઇન્ડેક્સ જોયું હોય તો, બરાબર. તો તે ટાઈમ પર અમે IFSC એટલે કે સેબી કે આરબીઆઈની અંદર નહીં આવે કે આપણે મોરિશિયસ રૂટથી જઈએ, દુબઈથી જઈએ, આ બધા પૈસા આપણા ગિફ્ટ સિટીમાં આવે. અલિયન ધેર વોઝ નો એન્ટ્રી, રાઈટ. પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં ના આપણે બધું દંડા વગર કામ નહીં ચાલે. તો અમને એમ કહેતા કે ભાઈ ઉપરથી કે સરકાર કહે છે કે બિરલાની ઓફિસ જોઈએ છે, HDFCની. અત્યારે સ્ટોક એક્સચેન્જથી લઈને ઇવન ટાટા અને બધા જે ફ્લાઇટ્સ છે, બરાબર છે, એ બધાની પણ ઓફિસ, ફેમિલી ઓફિસીસ, વિપ્રો, આ બધી પણ આવી ગઈ છે ગિફ્ટ સિટીમાં. સેમ વે ડાયમંડ્સમાં બી મેં એક્સપેક્ટ કર્યું હતું વચ્ચે કે જ્યાં ખુલ્યું, બરાબર છે. વી વર જસ્ટ ડિસ્કસિંગ વિથ ગિરીશજી કે આનું શું લાગે, કારણ કે અમે ઘણીવાર અમારી ઓફિસીસ હોય ત્યાં રેન્ટ પે કરતા કે આટલું રેન્ટ જાય છે પણ શું ભરાઈ જશે કે નહીં. But when government focus comes, they generally willingly try to accept કે જે આટલા ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી હોય તેમાં ડિફેન્સ પણ આવવું જોઈએ, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ પણ આવવું જોઈએ, પેટીએમ પણ આવવું જોઈએ, સેમિકન્ડક્ટર પણ આવવું જોઈએ. તો આપણે આટલા ટ્રિલિયન ઇકોનોમી ક્યાં જશે? અત્યારે તો આપણે ખાલી જે જોઈએ છે 480 લાખ કરોડ, એ ખાલી માર્કેટ કેપ જોઈએ છે જે લિસ્ટેડ છે. હજુ તો જે યુએસમાં અને વર્લ્ડમાં છે હજુ એ બધી તો આપણે ત્યાં હજુ આવી જ નથી, રાઈટ. વી આર અર્લી એડેપ્ટર. જે અશ્વિન સરે કીધું કે એડેપ્ટેબિલિટી ઇઝ મસ્ટ. જ્યારે આવા ચેન્જીસ થતા હોય ઉકા વર્લ્ડમાં તો એડેપ્ટેબિલિટી ઇઝ મસ્ટ. સો એડેપ્ટેબિલિટી સાથે આઈ અર્જ કે આપણા ઘણા ઇવેન્ટ છે, જાનવી મેડમ અમારા હેલ્થના મેનેજર પણ આવશે, જેમ છે, એવી રીતના વી વિલ ડુ લોટ્સ ઓફ એક્ટિવિટી that helps to take their family office and corporate office નું એમનું જે સરપ્લસ, એ લોકો તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ છે, 35-40% રિટર્ન એમના માટે કંઈ નથી, પણ જે સરપ્લસ જે આવે છે
બરાબર છે, સરપ્લસ જનરેટ કરવાનું, એના માટે જે રાઈટ છે કે આપ કામ કરવા આપકા પૈસા આ રहा, તો આપનું કામ 1 દિવસથી લઈને 5 વર્ષથી 10 વર્ષથી વેલ્થ ક્રિએશન એટલા રોલ છે, એની સાથેની બધી જ ઓફરિંગ્સ બિરલામાં બી છે. સો વી વિલ જોઈન્ટલી હેવ વેરિયસ સેમિનાર્સ and we'll invite experts also. The way Manish sir has enlightened us, we will do lots of activities. Thank you, sir. Thank you very much. आज की इस शाम को अंत करते हैं और बस यही कहना चाहूँगी कि इवेंट तो सिर्फ एक शुरुआत है. सूरत में ऐसे एक्सक्लूसिव और प्राइवेट इवेंट्स मैं ऑर्गेनाइज करती रहूँगी. आप सभी के बीच ऐसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैं लाती रहूँगी और मेरे द्वारा मैं चाहूँगी कि आप मुझसे संपर्क में रहे, मेरे संपर्क में रहे और मेरा प्रोत्साहन इसी तरह करते रहे. आप सभी को मैं पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, आप जो भी आए यहाँ पे और मेरा प्रोत्साहन किया. थैंक यू सो मच पूरे दिल से आने के लिए, आपने अपना कीमती समय निकाला, आप आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गुड नाइट एंड शुभ रात्रि. थैंक यू सो मच.